Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Conference Series at the milestone of 2315. Thank you to YouTube viewers also for overwhelming support and our great speakers. Today, I would like to welcome Dr. Seema A.N., founder, Ameya Ayurveda Clinic, Bengaluru. Welcome, Dr. Seema. And I am really grateful to Professor Kamini Dhiman from All India Institute of Ayurveda, though she is in the flight to Dubai at present. So I would like to welcome our today's keynote speaker, Dr. Seema A.N., on the topic of a clinical approach to Ayurveda GARBHADHANA Samskara. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Let me know when I should start the presentation. I'll go ahead and... You can share, madam. You can share. Okay. Today, the topic of discussion is a clinical approach to Ayurveda GARBHADHANA Samskara, and many of us are familiar with what Ayurveda GARBHADHANA Samskara is, partially or completely, and many of us have been practicing it as well. Your PPT is not visible, but neither you nor your PPT. Yes. Now it will be shared. Yes, great. Namaskar. Namaste. Thank you, sir. Now I'll just go ahead with Yes. the presentation if it is audible and visible. Yes, clear. Okay. See, as the heading of the topic says, it is a clinical approach to Ayurveda GARBHADHANA Samskara. And like I was saying, Ayurveda GARBHADHANA Samskara, many of us are either partially or completely aware of, and we have been practicing for various period of time for now. But we'll go into the clinical approach of it while discussing cases where Ayurveda GARBHADHANA Samskara at Ameya Ayurveda Clinic has been quite a success. Now, to give you a bird's view regarding today's discussion, we'll go with introduction to Ayurveda GARBHADHANA Samskara. Will not be taking too long of a time. We'll just discuss the terms involved and what it means clinically and where is it rooted. And then we'll directly go into the case discussion while discussing also the principles underlying those treatments, why those particular medicines or treatments were selected, what aspect of Garbhadhana Samskara was applied there, and regarding the practical relevance. Now, when we say practical relevance, it does not mean whether we are testing as to samhitas are practically relevant, including the Garbhadhana Samskara, in this day and time or not, because we know that it is relevant. We are just going to be discussing how do we make it practically relevant? How well are we equipped in terms of be it training or in terms of confidence or in terms of being flexible enough to tweak these things a little to suit to the present generation. That is all, without losing the core of the principles that has been laid out in the Samhitas, because that would be a blunder then. You'll have to modify without compromising the principles. So we'll be talking about the practical relevance in those terms, not testing whether or not the Samhitas have given us a practical way. After having made that clear, we'll discuss very in a simple term how to set up a Prasuti Tantra Striroga clinic in specific and an Ayurvedic clinic in general, only for the last 5 minutes because it is a clinical topic. Now coming to Ayurveda Garbhadhana Samskara, see there are 3 terms involved, Ayurveda, Garbhadhana and Samskara, and Garbhadhana has 2 portions to it. Why have I specifically included Ayurveda is, see when today if you go back after this presentation and search where just simply give Garbha Sanskara or Garbhadhana Samskara on Google, the first sponsored ones, the ads that pop up on your Google would not be, the top 10 wouldn't be from Ayurveda practitioners, unfortunately. Okay, it would either be conventional medical practitioners or maybe even health coaches or so, and other people who have not been trained like the Ayurvedic practitioners have been in this topic. Okay, so when we say Ayurveda Garbhadhana Samskara, although it is rooted in Vedas, the
the continuation of that practice was taken up, the medical aspect of it, and also giving it a continuity. That responsibility was given to Ayurveda, a part of Atharva Veda, and also we have been taking it forward. And we should be more responsible in the present time where social media has taken over, where connectivity has increased. Everybody is aware of the efficacy of multiple such things, like including Garbhadhana Samskara, or it could be Kshaраkarma in Shalya treatment, or it could be Vrana management of Shalya, where other people have been taking the charge of it while they are also undermining the Ayurvedic practitioners for various other reasons, but also taking in charge of things that are favorable to them. So we should not be letting that happen. We should be aware that this is ours, okay? Ours to practice, ours to promote. Now, next is let the others also follow, but giving the due credit to Ayurveda that it deserves. Next is regarding Garbha and Adhana. See, while discussing about Garbha in Samhitas, when it is not followed by either a prefix like Vyapanna Garbha or a suffix like Garbhasrava, they mean only one thing, that is a healthy progeny formed out of Shuddha Shukra, Shuddha Shonita, where there is Jiva, meaning the gestation is viable, and Kukshigata, meaning it is intrauterine. So they are naturally excluding by definition of Garbha itself that it should be a healthy pregnancy formed out of Shuddha Shukra and Shuddha Shonita, where Jiva Avakramana has happened and it is within the Kukshi. And here Kukshi does not mean abdomen, here Kukshi means uterus. Okay, one of the organs of the Kukshi. And when they have already discussed about a healthy pregnancy, why Samskara term is used? How much more healthier can it be? We have spoken of all the healthy things. We have ruled out all the possible complications, like it ending up in a miscarriage or it being an ectopic. All that has already been ruled out by definition itself. Then why Samskara term is used? Samskara is refinement of even this healthy progeny. So healthy progeny is already attempted at. Refinement of that means what? Going a step ahead, like making the baby possibly of best intellectual traits that it has drawn from both the parents, making it look even more pleasant. The appearance, the phenotype, the genotype of the baby should be of highest good possible qualities that it has drawn from both the parents to be. So that is ensured through Ayurveda Garbhadhana Samskara. Now, Adhana, meaning bringing in or supporting this phenomenon of achieving the highest possible trait in the baby, has to be, you cannot simply talk about it. It has to be done through certain discipline or methodical ways. That is Adhana, or that action of or phenomenon of bringing about this thing. Now, we spoke about it, the Garbhadhana Samskara rooted in Vedas. So, where is it told? It is mentioned in earlier Vedas also. It was mentioned in with three objectives, which is given in the lower part of the slide, with the objective of preparing an individual for social responsibility, meaning continuation of species is a responsibility of every being, and humans are also endorsed with it. So a societal responsibility after Samavartana, that is graduation ceremony, and Vivaha Samskara, that is wedding. The next Samskara in the line would be Ayurveda Garbhadhana Samskara. And to perform Shraddha rituals, okay, to those also carry certain implications. Among the Naimitika karma and Nitya karmas that are expected out of an individual, Shraddha rituals are also one. Will not go in depth because I am not the expert to be speaking about implications of it and why it is certainly necessary. But we'll just know today that these two were the primary reasons. And also for these two to be done, a Shreyasi Praja was required. Okay, a Shreyasi Praja is required, and that aspect of Garbhadhana Samskara, that responsibility was given to the medical branch of Veda, that is Ayurveda. So, and from that is where we have drawn that Shreyasi Praja term is also there in Samhitas. And when we say that, we are clear that they only mean either Gunavan Putra or Gunavati Kanya. So there is no bias towards any one gender, or neither is it talking only about the physical appearance and such things. It is an overall personality where it is involving all physical, psychological, and spiritually properly healthy, optimal individual is born. That is Shreyasi Praja. Okay. And
of either of the gender as spoken, either a putra or a kanya. Now, next is regarding how do we achieve it. See, this is one of the best aspects of Samhitas where it does not speak of things and leave it there. It gives us practicable ways of doing it. And those practicable ways go on for generations, for millennials. Okay. And the three ways of doing or achieving Garbhadhana Samskara is initially Bija Samskara, which includes Garbha Purva Paricharya. That is all the preconceptional steps that are involved in Garbhadhana Samskara. Garbha Samskara, that is Garbhini and Prasava Paricharya, includes prenatal care and also a kind of Prasava Paricharya, perinatal, but including up to delivery of the baby and of the placenta. And it also extends to include Bala Samskara, which is Shishu Paricharya. Now, for today's discussion, given the time constraint and given the topic, we will be sticking to Bija Samskara alone. Garbha Samskara and Bala Samskara are also parts of Ayurveda Garbhadhana Samskara, which we should be aware of. All right. And coming to the topic proper, that is Bija Samskara. See, when we speak of Bija Samskara, we are trying to bring about the most healthy possible gametes, okay, including the reproductive organs. They are not worked upon separately. Like now we'll start preparing male gametes, then we'll start preparing female gametes, then we'll work on endometrial thickness. It is not done that way. It is all done parallelly. The term that is given for all of this is Bija Samskara. And it starts with selection of partner. Now we were discussing about practicability of these things. Okay, how relevant Ayurveda Samskara can be today for us. How well are we equipped? Now, whoever is practicing and whoever has been practicing Garbhadhana Samskara particularly would be aware that you do not get patients at this level where selection of partner step can be applied in the clinic. Okay, they come to you after probably years of fertility treatments when partners have already been selected, years of necessary or unnecessary treatments have already been given and they've failed, and now as a last resort they've come to you for fertility treatments where you are also planning along with treating infertility to take up the Garbhadhana Samskara in that patient. So selection of partner part is already gone. How do you address that? Do you so give up on the entire Garbhadhana Samskara? No, we'll not be doing that certainly. Rather, what we will be doing is whichever aspect we can start the treatment with, we'll start from there. Okay, so selection of partner has already happened. Then start with the ahara preparation. Start with the purva karma for shodhana. Then go for shodhana. Such things. And one more thing is, if you have an opportunity of discussing regarding selection of partner in any patient. So if you are sitting in a Stri Roga practice, in a Stri Roga clinic, you would certainly be getting patients with reproductive concerns, mostly female patients, but also male patients occasionally, who come to you for their concerns related to reproductive system. Okay, could be delayed menarche or could be delayed period or irregular period and such other things. Take that as an opportunity. Initial days of practice, you will have enough and more time to counsel every patient that comes to you. So take that opportunity to counsel them regarding the importance of selection of partner in Garbhadhana Samskara. Introduce them to that. Okay. And you might be able to help prevent certain diseases which can be prevented if the selection of partner step of Ayurveda Garbhadhana Samskara is applied in a nice way. All right, you might be able to prevent diseases like, say, thalassemia. Okay, you might ask them to screen if there is history of consanguineous marriages among the parents. You can tell them to screen for thalassemia and maybe you can prevent it if they are not yet married. Okay, so make use of that selection of partner in those two aspects, right? And how does it come if they are already married, they come to you for Garbhadhana Samskara? How do you address it? Screening of the partners is given there. And Samhita gives very clear and a very long list in both Charaka and Sushruta Samhitas. You find that there is a detailed description regarding how well selection of partner has to be taken up, how chronic diseases should be eliminated, how gynecological diseases should be eliminated, how even psychological aspects while they are planning has to be excluded or at least addressed. Okay, you cannot be like once the couple have already come to you, you cannot
talk to them about ruling those things out or eliminating those things out. You should now be addressing it through treatment. And then we have, as you can see in the slide, there are two things. Ahara has been given at two places, both before Shodhana and after Shodhana. The relevance of this is very important to understand. You'll get quite a lot of anxious couples who would want then and there the Shodhana. And they would be reading about detoxification procedure, so to say, so much on the internet. They would be equipped with so much information by the time they come to you, that they come asking you for a shodhana. They say, we have tried everything, this is the last straw we want to try. And they would not be prepared at all. Okay, the ahara that you give there plays a very significant role. And the shodhana that is planned timely is what gives you result. Otherwise, you'll keep causing because of your plan. Ahara, when we say to shodhana, it is to prepare the Kosha and Agni, which might not be healthy, which is the root of the disease that they would be facing. Or even if there are couples who are not diagnosed with anything, they might require this preparation. You go for ahara, which can bring about some improvement in the Agni and Koshtha function, so that there is better receptivity later when you give higher doses of grit for Shodhana purpose. Then comes Shamana Aushadha. The principle behind it is simple. Shamana Aushadha and Ahara post Shodhana should be Snigdha Ushna for the Purusha partner, and it should be, Snigdha Shita for Purusha, where taking into consideration the gunas of Shukra, and Snigdha Ushna for Stri, where we take into. Sorry, I think there was a. No problem, madam. Please take your own time. Yeah. All right. Am I audible and visible again? Yeah, all right. Okay, as we were discussing, the principles underlying both Shodhana, Paschat, Ahara, and Shamana would be Snigdha Shita for Purusha, where it is taken into consideration because of the Shukra gunas, Shukra being Saumya, and because Artava is Agneya, we would be going with Snigdha and Ushna Dravyas for these three. And we are not talking about Ati Ushna, Ati Shita, Dravyas, Ahara, or Shamana Ushadas. We are talking about Sama Ushna and Sama Shita Dravyas, so that they do not create any imbalances, but they help in promoting the quality that is there. Then comes the most ignored part, that is ritual and counseling aspect of it. See, now the ritual part that is given in Samhita is Putreshti Yajna. The objective of it is quite simple. They are trying to incorporate or include all those people who would be responsible for bringing up of that child. The upbringing responsibilities given to both the families and the parents to be that are involved through these ceremonial markings. And they certainly have their own spiritual positive aspects as well. And how do you make it practical to these times and the place that you live in, or the religious belief of the patient? You ask them to follow anything. You need not impose on them Putreshti Yajna itself. If that is feasible, then great. But if it is not feasible, ask them to follow anything that they believe in. And next comes the counseling aspect, where you are talking not just regarding how to achieve a healthy pregnancy or how to continue the pregnancy, what the nutritional demands are during the pregnancy and how they are to be met. Because most of us limit our counseling aspect only to it, but we also should incorporate other things as to what you should be reading, what mantra should you be listening based on what you aspire your progeny to be. Okay, that also should be included in more than one counseling sessions that you would be taking as part of your consultation. Next, so these are all involved in Bija Samskara. Coming to case discussion, which is the main topic of this presentation, correction at physical level. So in the initial slides, we saw that Garbha Samskara addresses three things. One is physical, the other is psychological, and then comes the spiritual aspect of it. Now we'll talk about how a correction was made at a physical level in this couple. Before going to that, let me tell, this categorization is made only to convey that these things are practical and that these things happen in clinic and we can categorize them just for the sake of understanding. Does not mean that
there were no psychological aspects at all, or there were no spiritual aspects at all playing role in this couple. All right. And before we go into the discussion, let me make one more thing clear. When we say Garbhadhana Samskara, can we apply it to infertile couple, or is it only to be applied to a healthy couple? It is applicable to both. Okay. In healthy couple, we directly go into Garbhadhana Samskara. In an unhealthy couple, we go first into treating the concern. This I spoke of when we cannot choose the partners anymore. When the screening was not done initially, then what do you do? Or a screening was done, but there was an acquired disease later on, develop post marriage. How do you do that? How do you handle that? You will be going for addressing the disease in hand. All right. So Garbhadhana Samskara is applicable to both healthy and deceased couple. Having said that, we go into first case discussion where at physical level, the Garbhadhana Samskara was applied, and this couple, their husband was 35-year-old with peritospermia, and wife was 32-year-old with oligovulation and a uterine fibroid, a very small fibroid, not very relevant. It was not even in the cavity, it was not distorting the implantation, but just she was diagnosed with it. So just mentioning what all conditions were there and how did we approach it. See, she came with a history of having been trying for 8 to 10 months. Please share it again. You are mute. Yes. Yeah, I'm No waiting. problem. No problem. These are technical glitches, bete. Please Not don't get nervous. These are technical glitches. It can happen with everybody. Don't worry. Anytime. yeah. This platform belongs to you. So don't get any complex for that. Right. Thank you, sir. I'm not quite sure why it is happening. It doesn't happen on other days. No Probably it problem. is No chosen this problem. day. All right. So as we were discussing, this couple presented with infertility. They had been actively trying for 8 months. They did not even fall in the under the category of infertility by definition of conventional OBGYN textbooks also, but they were put on 4 repeated IUIs, and she was initially put on 3 cycles of ovulation induction with medicines and HCG injection, and later on she had an IUI planned, and double IUI was done in one of the cycles, and all 4 of them failed. And we could achieve through Ayurveda conception in 2 months, and both of them were given with Virechana. This was one of the couples who are quite anxious. Okay, they came for Shodhana and they were quite demanding for Shodhana. Had we started Shodhana when they were demanding it, we couldn't have been able to achieve it. Simple reason being, they both had Santarpana Janya Vyadhi. They had Bahudosha, the wife especially had Bahudosha Lakshanas. Both had Samadosha Avastha. So in them, main line of treatment was Rukshana. Okay, husband was given with Rukshana at his place because his BMI was normal. He was simply asked to practice it every day at home. And wife was also asked for that, but she was also given with 40-minute Udvartana for 7 days at clinic. Post which this was also accompanied by Pachana and Deepana, both Ahara and Aushadha Dravyas. She was given with Chitrakadi Vati, husband was given with Agnitundi Vati. Both were given with Bilwadi Agada. Agada not only achieves Pachana, it also reduces the impact of these other Visha. Visha as in not just the poisonous substances which are fatal, but Visha which can be hidden in the
food like taste makers that are used, or flavors, artificial essences that are used in ahara, or the pollution that we live in, the polluted environment that we live in, and so forth. Okay, so Pachana Aushadha, usually when we select some Agada which has that. And Bilvadi Agada is one which is very easily available and does the job. And then she was subjected to Shodhana initially so that we do not waste the cycles. And she was given with the Mahakalyanaka Ghrita, keeping in mind that there were 4 failed IUIs without any significant cause in her for the achievement of pregnancy. So we went ahead with Mahakalyanaka Ghrita, keeping in mind that dosha would be addressed. It is Vata Pitta Shamaka. Also, we wanted to address the karma factor if there are any. And then we went for um, Shamana Aushadhas with preparations which would increase her fertility. Like Garbhapala Rasa was given and Leptidine was given. We did not go directly with Ghrita or Lehya preparations because, like I said initially, she had a Santarpana Utthavyadi. So we were waiting for it, but she conceived in the same month. And the continuation of pregnancy has been there. She's now 36 week pregnant. We are expecting delivery in the next month. Okay, and her testimonial and reports are attached here. Now, what was the underlying principle in this patient? We had a evident physical cause here. Okay, ovulation is required. That was not happening regularly. She did not have her cycles very regular. There was both oligomenorrhea and oligovulation. And teratozoospermia, although not very severe, 3% were normal. The cutoff is 4%. Even then, we had to go for it, given that there was a history of failed IUIs. And he was also given with Shodhana. He was given with Grita, Vidaryadi Grita. Uh, Also, this couple presented with acquired secondary premature ejaculation and erectile dysfunction. Okay, and that too started post, they started trying continuously for pregnancy. So, keeping that in mind, Vidaryadi Grita was given for the husband. And their first visit was in June 24. And after having done all this, the cycle that they both underwent Vireshana, they conceived. That was in August, they conceived. Almost 20 to 25 days of Pachana Rukshana Deepana was required in them. We did not directly jump to Shodhana. The underlying principle was Shodhana of both Bija, male and female gametes, Garbhashaya, to make sure that the receptivity is fine. And also, we had done it in a methodical way. Next comes one case where psychological cause was quite evident. Okay. Again, not to say that these are exclusively physical, psychological, or spiritual causes, but these were more dominant, that is all. And here the husband was 32-year-old with presented with again stress-induced erectile dysfunction and premature ejaculation was what for which they started visiting regularly. Wife had visited 2 years ago in June 22 for dermoid cyst and a polyp that was there, and that got corrected with Yogavasti. We did not even have to go for Uttaravasti. Could have been an error in on radiologist part where polyp was diagnosed. That could have been an error, but in subsequent scans it was not there. Dermoid cyst remained even through the pregnancy. It remained, and it did not increase in size, nor did it become active clinically. So we did not bother about it, and she was ovulating through the other ovary. It was unilateral dermoid cyst, and asthenospermia was there. Motility was reduced, given that he had barely any physical activity and stressful life and sedentary. That was expected. How we started treating here is husband was given with only Shamana Chikitsa. That is how we proceed in our clinic. We do not jump into Shodhana Chikitsa given the feasibility in terms of economic condition and also in terms of feasibility, given that everybody is working more than 12 hours and whether or not they will be able to give that dedicated time the Shodhana procedures require. And wife was given with Yogavasti, and post that, post 2 months of treatment, close to 1.5 1 month, 20 days of treatment to husband, they conceived. Okay, and here Medhya medicines were given. He was given with Gokshuradi Gugulu
and Smriti Sagara Rasa, Sarasvatarishta, and the wife was given with Gugulu preparations and Chandraprabhavati, Shilajatu and Gugulu, to make sure that dermoid cyst remained dormant and polyp, if there was any, did not recur. And the other principle underlying was Medhya, both were stressed. That is the reason. And Virya Vriddhi was also required. Virya Vriddhi, not just in terms of increasing the Shukra quantity, we also wanted the motility to improve, overall vitality to improve. Therefore, that was also the reason. And Shukra Prasadana. See, Saraswatarishta, many of us think it is only for disturbed sleep or to address hypertension and such other things. One of the Phalashruti of Saraswatarishtam is Shukra Prasadana. So when there is a Shukra Dushti, you can, and it is stress induced. When you see multiple causes, you don't have to address it with too many medicines, one medicine for every symptom, rather something that can address both the situations that was given. Gokshuradi Gugulu addressed the Apanavata. If we again see the Phalashruti of Gokshuradi Gugulu, we understand that it is given in both genitourinary uh, diseases of both male and female, and it also helps in excess kleda shoshana, that is also there in Phalashruti. So this here was given to address the Apanavata Vikriti, and this Gokshuradi Gugulu alone initially was given before the semen analysis was done, when he had only ED and PE, and he had started responding only for Gokshuradi Gugulu. We do not start with expensive medicines again. Makaradwaja Gulika, all those, not all can afford. So we started with Gokshuradi, and there was good response in that because Apanamata was regulated. All right. And here it was at a psychological level, stress of everything, stress of regularly trying, stress of society asking you've been married for so long, all that caused underperformance during the intercourse. Okay. And since we started regularly from March, this patient again conceived in April 24 within 2 months of treatment. Okay. Next, coming at correction at spiritual level. So here husband is 33-year-old and healthy, was not diagnosed with any chronic or reproductive disease. Wife 33-year-old had torch IgG raised for both CMV and rubella, and they were quite high, as you can see, although not for CMV. For rubella, it was quite high than the normal. And we were planning to go for repeated shodhana for the purpose of Rakta and Bija shodhana. Although the patient was quite irregular and it did not quite go how we wanted it to go. We could go only for one Virechana and 2 months of torsional, and recurrent abortion was ruled out by her conventional gynecologist, saying that triploidy need not always cause abortion, which is theoretically true. But given the history in her family itself, where 6 abortions were there in mother, we can assume that triploidy had a role to play, certainly. And her first visit was in March. She never had a problem conceiving. So she conceived during September month, post Shodhana in July. And I was a little skeptical that whether or not the pregnancy will continue, because this was her third pregnancy. And first time it was, the miscarriage happened around 12th week. The second time it was 15th week or so. So this time we were just waiting for the anomaly scan. The first scan showed only two vessels, single artery and single vein. And although every other organ was fine, we were not sure whether it is going to continue. But in the subsequent scan in following fourth week, it was normal. It was just the visibility was not there given the position of the baby and the cord. But it turned out to be a healthy pregnancy. She is about to deliver in another 2 weeks. Okay. And this is the reason we are talking about Daiva Vyapashaya Chikitsa was also necessary in her, and Shodhana was also necessary in her, although it did not go quite well. See, when we speak of Daiva Vyapashaya Chikitsa, it works in two ways. Either we can address it through certain ritualistic procedures. There are experts to handle that. You'll have to refer the patient to them, which I do when the patient has faith in it, or when they have a family astrologer kind of thing. I do refer them there. Or it can happen by you experiencing that karma. Karma kshaya happens in two of these ways. So probably in this patient, it happened through the second way, where karma kshaya was there post experiencing the karma which was due for her. And so Shodhana certainly had a impact on Rakta and Bija Shodhana. Okay. Although repeated Shodhana is required, here one Shodhana did the job. All right. And
Next, in a healthy couple, because Garbhadhana Samskara is particularly for healthy couple, 29-year-old husband and 31-year-old female um, came to us, where this was one of those couples where we were quite surprised because they couldn't recollect when was the last time they had a restaurant food, outside food. They were not able to remember when they slept uh, during the day or were awake during the night. So basically, all the dinacharya that is to be followed were followed according to Vidhi in this. So we went for Mridu Shodhana and Vata Pitta Shamana just to make sure that there is no risk of miscarriage or so. And they conceived in the immediate next month of their consultation, November 22 and December, they conceived. And these are testimonials which are required if you're practicing, um, yeah, whether in a hospital setup or in a clinical setup, just to feel good for yourself and also to tell the other patients. Now, how can we make this Garbhadhana Samskara more effective? See, we all know what steps go into it. We all know Shodhana has to be done. In spite of following all that, there might not be successful conceptions that happen. So, how do you address that? You'll have to pick up your medicines in the correct time and that suits the patient. Although Bija Pushti Rasa of Papeshwar Pharmacy is very effective, not all can afford it. Not all would require it. Okay, same thing with Makaradvaja Gulika, same thing with certain kalpas like Brahmi Shatavari Adikalpa, which are quite expensive. Maybe the job can be done with a tablet that costs 1 or 2 rupees per tablet. Okay, how do we do that? By three things. One is history taking. We should not overtly rely on bedside examination books that we study in our second professional BAMS. We should know everything that is there. We should know more. Ayurvedic history taking, this is something that I learned in Samhita Nirupana classes, which I have not seen back from. So every patient's history is taken in this way at our clinic because we have the time that it takes. We do not take more than 10 to 15 patients a day. And it is quite feasible. It takes anywhere between 15 to 20 minutes. What does Ayurveda history taking mean? From morning that the patient wakes up to the next morning, what all things patient does in a sequence. Okay, then in the same thing, you incorporate everything else that you study in your bedside examination. Just like you want to include past history, do that. It happens in a flow after we do it for a while. You want to examine the patient, you want to ask occupational history, family history, incorporate all of that into your history taking, but also make sure that you are looking at what the patient is doing on a daily basis in the present for the past few months, because that significantly decides your first line of treatment. Okay, and any avidhi in dinacharya. Dinacharya vidhi are given from waking up with Suryodaya to sleeping post Suryasta and eating with no adhyasana, no vishamashana, etc. If any of those you identify in your patient, ask them to correct that with all the seriousness. Tell them your medicines and treatment will work only if they also contribute from their end. And examination again, do everything that is there in the physical examination book and your OBGYN book, but also assess dosha lakshana and dhatu pradusha lakshanas. Categorize the lakshanas that you have seen under these. Know which dosha is pradhanataha dushta, whether it is sama or nirama, whether it is swatantra or paratantra. That categorization you make. Then dhatu pradushana lakshana, whether there is rasa through shukra dushti and then there is bija dushti, or there are intermediately healthier dhatus being formed, although there is shukra dushti. That can also happen. Okay. Pratiloma kshaya concept is there. No? Similarly, pratiloma dosha dushti also can happen. It is not always necessary that all the dhatus are dushta if there is bija dushti. You don't find that quite often, but it can be like an acquired immediate cause, like an infection, where patient has a healthy lifestyle, healthy diet, everything, but there is a PID that the patient has recently acquired, or there is a pyospermia that the patient has recently acquired. Not necessary that the other dhatus are also dushta. Next comes SS investigations with an Ayurvedic lens. Okay, how do we do this? One example is when you look at, let's say, a semen analysis report. If motility is reduced, naturally Apanavata is in Kshaya form. There might be Avarodha to it, or it might be Swatantrataha in Kshaya form. Either of it, like through an Avarana or because of the
Swatantra Kshaya of Vata, it might have happened, but there is Kshaya. If let's say there is teratozoospermia, there is Panchamahabhuta Vikriti that has happened, likely a Tridosha Vikriti. Okay, quantity is less, total sperm count is less. Prithvi and Apmahabhuta are at fault or reduced. So Kapha Kshaya is there. Okay, so your dravyas would be addressing that. That is regarding assessing even investigation reports through an Ayurvedic perspective, trying to assign what dosha, dhatu are involved. And always make sure to assess Agni before starting your first line of treatment. If we start with Shatavari Ghrita in the first visit in a Prabhuta Sama patient with a Santarpanottha Vyadhi, it is never going to really help the patient conceive. Okay, it is always going to cause more Sama Lakshanas, more complications as a result, and not what you are desiring through your treatment. Now, this was regarding it. And how do you set up a clinic? First, decide the nature of practice based on your degree and your expertise that you have got. Location, very important. Okay, location decides how many walk-ins you will have. Okay, and how do you assess the location? Let it be in a good area, but let there not be too many clinics around. And budget, decide how do you want it to be fancy initially, or do you want it to be normal initially. That decides your budget. Equipments that are necessary for the nature of practice that you have chosen, you would require certain surgical equipments. If you're practicing Uttaravasti, etc. Okay, you would require basic minimum. Sterilization autoclave machine would be required, or a UV chamber would be required. Medicines, know the safety as well, because there are n number of pharmacies that prepare n number of medicines these days. So make sure that it is safe also to the patient. The preparation is proper, particularly the Rasaushadhas. Never fail to document the cases. Okay, and also make sure whatever guideline is provided in the um, healthcare sector of your state, you are sticking to that. Like all the registration is in place. You should have practitioners registration. You should have clinical registration. Never make yourself, prone for risk of legal things. Never be liable for legal issues, whether it is Prasuti clinic or otherwise. And always follow the ethics of practice. And always make sure that networking is good. Okay, like talk to people of your field before you're starting clinic. Talk to people of related fields where you can refer the patient to at the right time. Okay, all that is required. Now, any discussion that you would want to take up, you may ask. Okay, anything that you did not follow in the presentation, you can go ahead and ask. Excellent, madam. Excellent. You have covered all the aspects in your speech. Great. Now I would like to welcome any question or answers if anybody has. रामवीर सर हैं, राजक्रंती जी हैं हमारे साथ, जल्पा जी हैं, डॉक्टर जेपी सिंह जी हैं. Any question, any addition, would like to welcome. आपने बहुत ही अच्छा बताया सीमा जी, बहुत शानदार स्पीच रही. और टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. सभी की सभी के लिए आते हैं. आप और कुछ ऐड करना चाहती हैं? हरिओम. राजकृंती जी, डॉक्टर राजकृंती जी, जल्पा जी, जी सर, जी सर, नमस्ते सर। आप लोगों के वैल्यू एडिशन कुछ तो लगेंगे मैडम. देखिए, आप जी लोग जी एक्सपर्ट हैं. स्वागत है. जी डॉक्टर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार. डॉक्टर सीमा, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। और सर, हम तो एक ही कॉलेज इंस्टीट्यूट के हैं, सीमा और हम तो जामनगर से ही हैं दोनों। जी सर। हाँ सीमा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि आपके पास, जैसे जिसमें हस्बैंड का काउंट बिल्कुल नील है? मैम एक्चुअली एक पेशेंट का नील तो नहीं था,
1 मिलियन स्पर्म काउंट था। और उनका कॉज था कि वो एक साइंटिस्ट है जो रेगुलरली रेडिएशन, मतलब वो मेडिकल इक्विपमेंट्स डेवलप करते हैं, तो R&D में भी है और फर्स्ट हैंड उनको टेस्टिंग में भी जाना पड़ता है। तो उनका हमने शोधन किया और उनको अ, हमने स्वर्ण वाले मेडिसिन दिए थे। उनका 10 मिलियन तक आया है अभी। तो कंप्लीटली एजोस्पर्मिया वाले अभी नहीं है, नहीं देखे हैं। ओके, बिकॉज ये तो क्योर हो जाते हैं, जैसे 1 मिलियन है या कुछ ऐसे, तो मेरे पास भी हाँ। केसेस है, बट अभी 4-5 ऐसे केस है जिनके हस्बैंड के अकाउंट बिल्कुल नील है। ओके। और फीमेल का तो जो भी इशू था, जैसे कुछ का ट्यूबल ब्लॉकेज है और अदर इश्यूज है, वो तो सॉल्व हो चुके हैं। अब मेल का विरेचन कराने के बाद भी अभी तक काउंट तो नील है, बट हम उत्तर बस्ती प्लान कर रहे हैं। आप इसके अलावा कुछ देते हैं? मैम एक्चुअली अगर ग्रेड 4 वेरिकोसील है तो हम्म या फिर उनका प्री टेस्टिकुलर अगर FSH की है कि वो हाइपोथैलेमिक इंसफिशिएंसी हो रहा है जैसे फीमेल काउंटर पार्ट में होता है, तो हम्म शायद शोधन के बाद नस्य भी दे तो बेटर हो सकता है। मतलब हार्मोनल ऐसे अगर उनमें भी करवाए FSH LH और TSH हम्म और हम्म साथ में नस्य भी दे तो वो हो सकता है। ग्रेड 4 टेस्टिकुलर वेरिकोसिल अगर है, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, हम्म फॉर्मेशन में कोई इश्यू नहीं है, तो हम्म सर्टनली शोधन और उत्तर बस्ती से रिजल्ट मिलता है। हम्म एजोस्पर्मिया में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ पुअर ओलिगोस्पर्मिया में मिलता है। तो हाँ, उसमें एजोस्पर्मिया तो में मिलता है, यस। हमें वो दो देखना है कि हाँ, वो तो हाइपोथैलेमिक मिलता है। इंसफिशिएंसी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है। यस शायद सर्जिकल करेक्शन हेल्प कर सके। पोस्ट दैट यू कैन गो फॉर उत्तरवर्ती, मे बी दैट माइट हेल्प। यस यस, ये करते हैं, देखते हैं 4-5 केस है अभी, इनमें क्या रहता है। और बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो सीमा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी वहां से आते हैं सब लोग, जामनगर वाले कोशिश तो करते हैं अपने अपने लेवल पे। आपका भी अच्छा है मैम, पेशेंट फ्लो भी ज्यादा रहता है, ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, अपने तो यहाँ के थोड़ा गवर्नमेंट में है, पर ये काफी अच्छा कर रहे हैं आप भी। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल तो अपना सबका लगभग सेम ही रहता है, कि शोधन करा के योग बस्ती उत्तर बस्ती करके फिर शमन ड्रग्स देते हैं। मैं भी सेम ही हम्म। रखती हूँ। साथ में कुछ केसेस में, जैसे हम बोलते हैं ना सोमनस्य गर्भ जनना, तो मैं प्री कंसेप्शनल के टाइम पे ही जो वर्डशुंग वाला नस्य है वो हाँ। करवा देती हूँ पेशेंट को 8 डेज के लिए। ओके। उसके भी काफी अच्छे इफेक्ट मिलते हैं अपने को। ओके। चलो, थैंक यू सीमा, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। मैं अब डॉक्टर रामवीर शर्मा जी को, प्रोफेसर एंड हेड PTSR उदयपुर, आदरणीय भाई जी रामवीर शर्मा जी, हम लोग लाइन से सब जामनगर वाले ही हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर पवन जी। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर था तो जुड़ नहीं पाया, अभी जुड़ रहा हूँ। मैं निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट अपने, जैसा कि कामिनी जी आप पहले ही अपने कई बार कह चुके हैं कि कामिनी जी हम लोगों के ऐसे वक्ता लेके लाती हैं जिनको सुनने का मन करता है। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा बाहर था। आज जो सब्जेक्ट दिया था बहुत ही जबरदस्त दिया था, गर्भ संस्कार। हम श्रेयसी प्रजा प्राप्त करना चाहते हैं, मगर गर्भ संस्कार नहीं करना चाहते। डायरेक्ट अपने बस फर्टिलाइजेशन हुआ, एंटीनेटल केयर पर उतर गए। एंटीनेटल केयर करने के बाद में, उसके बाद में ये भी पौष्टिक आहार देना चाहिए, वो भी देना चाहिए, बात करते हैं नहीं। जहां तक बात आती है गर्भाधान की, तो सबसे पहले आचार्य कहता है पुरुषस्य अनुपहत रेतस स्त्रियाश्च अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशय। अब ये कब होगा? गर्भाधान के बाद तो नहीं हो सकता, गर्भाधान से पहले करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें गर्भाधान से पहले ही जो गर्भ संस्कार किया जाता है, वो गर्भ संस्कार शुरुआत में ही करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जैसा कि पुरुष के, और दोनों को ही करना चाहिए। अकेली स्त्रियों का, पुरुष का अनुपत रेतस, और स्त्रियों की 3 चीजें बताई, स्त्रिया अप्रदुष्ट योनि शोणित और गर्भाशय। देखिए 3 चीजें बताइए, त्रयावर्ता योनि बताई, उसमें गर्भाशय भी बता दिया, मगर यहाँ पे आचार्य कहता है योनि भी शुद्ध होनी चाहिए, गर्भाशय भी शुद्ध होना चाहिए, और शोणित भी होना चाहिए। शोणित में दोनों ही। शोणित में कौन सा? हम यहाँ पर अंतः पुष्प लेते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि कई बार
प्रॉब्लम आती है, मैंने अपने हमारे आचार्यों ने कहा भी है और हमारे सहकर्मियों ने, हमारे विद्वत लोगों ने कर भी रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। कल अपने ऑटिज्म पे अपने चर्चा चल रही थी, तो हमारी जो शुक्र है और शोणित है उसमें कई जो प्रॉब्लम्स अपने जो इस तरह की रहती हैं कि जेनेटिक भी प्रॉब्लम को भी हम अगर सही तरह से पूर्व में गर्भ अपने संस्कार के पहले ही, गर्भाधान से पहले ही अगर संस्कार करते हैं, तो आचार्य उसमें कह गया स्त्रियों के लिए क्या देना है। तो स्त्रियों के लिए जो ऋतुकाल के अंदर बताया है, हवि के अंदर प्रयोग किया गया है, मांस और उसका प्रयोग किया गया है, मांस तेल मांस। और पुरुष के लिए क्या किया गया, तो दोनों का आहार का व्यवस्था और विहार की व्यवस्था के आधार पर शुक्र की, कई शुक्र के दोष होते हैं, एस्टिनोस्पर्मिया होता है, जो ओलिगोस्पर्मिया होता है, और उसके साथ में डिफॉर्म स्पर्म्स होते हैं, इनकी मोटिलिटी कम होती है। इन सबको बढ़ाने के लिए पहले अगर अनुपात रेत की चिकित्सा करेंगे तो गर्भाधान से पहले करनी है। इसी तरह से ओवम के अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ रही है तो उसको गर्भाधान से पहले करनी है, जिससे स्पर्म का और ओवम का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सही रहे। अब इसको कैसे क्वालिटी रहेगी जी, तो कई बार मैं कहता हूं कि ये जो गर्भाधान के लिए शुक्र और शोणित है, या गर्भाधान के लिए ओवम या शुक्र है, ये परम धातु है। और जितनी गूढ़ धातु होती हैं, जितना दोष गूढ़ धातु के अंदर जा रहा होता है, रस के अंदर गया हुआ दोष है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। अस्थिगत बात है, अस्थि के अंदर कोई दोष जा रहा है तो उसको शुद्ध करने के लिए कठिनाई होती है। और दो तरह की चिकित्सा है, समन चिकित्सा और अपने शोधन चिकित्सा। तो समन चिकित्सा जब गूढ़ धातु नहीं है उसमें समन चिकित्सा ज्यादा काम कर पाती है, इफेक्टिव रहती है, मगर जब गूढ़ धातु के अंदर चली जाती है तो शोधन चिकित्सा ही होती है। तो अपने आचार्यों ने भी कहा है, हमारी सभी साथी, मैंने फिर से दोबारा कह रहा हूँ, मेरे कई अपने इसमें प्रसूति स्त्री रोग के विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं, वो विरेचन, अपने विरेचन के बाद में बीजम भगवती कार्मुकम, तो नृत्य की यहाँ पे अपने सीरियल चल रही है उसमें भी कि वमन विरेचन वस्ती जो दे रहे हैं उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि इसमें अंदर ओवुलेशन के अंदर, ओवम के अंदर जो धातुगत व्यवस्था है, शुक्रगत दोष, ये ओवम को मैं स्त्रीगत शुक्र ही कहूंगा कि गर्भाधान के अंदर जो शुक्र के कार्य हैं, गर्भाधान करना वो स्त्री के उसके द्वारा ही होता है, बाहर निकलने वाला तब का नहीं, वो एक रूप जरूर है। तो शुक्रगत दोष होने के परिणाम स्वरूप इसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पंचकर्म कब करना है, देह शुद्धि, देह शुद्धि कब करनी है, गर्भाधान से पहले। तो मेरा ऐसा मानना है कि गर्भ संस्कार जो किया जाए, गर्भ पुत्रेष्टि यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ भी उसी में आती है, मन को अनुकूल करने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए। तो जो भी अपने द्रव्यभूत चिकित्सा है, अद्रव्यभूत चिकित्सा है, चाहे उसमें आश्वासन हो, चाहे उसमें मेडिटेशन हो, चाहे उसमें यज्ञ हो, ये सारी मेंटली प्रिपरेशन के लिए। और जानते हैं अपने सोमनस्कम गर्भ कराणाम, जब तक मन सही नहीं होगा, मन का मतलब है GNRH पे काम करता है, और GNRH रिलीज होगा तो FSH रिलीज होगा, FSH रिलीज होगा तो ओवम पर अपने उसमें फॉलिकल मैच्योर होगा, फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मन को सही करने के लिए अपने गर्भाधान से पहले यज्ञ हम करते हैं अपने श्रेयसी प्रजा के लिए, जो मंत्रोच्चार करते हैं श्रेयसी प्रजा के लिए, जो गर्भाधान संस्कार के अंदर पहले जो गर्भाधान संस्कार से के समय गर्भ के लिए यज्ञ करते हैं, वो सारी अपने इसके लिए श्रेयसी प्रजा के साथ साथ में गर्भाधान संस्कार के अंदर आएगी। गर्भाधान प्रक्रिया अलग है, गर्भाधान संस्कार अलग है। संस्कार हो गुणांतराधानम, और गुण किसके, जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है। प्रोडक्ट कौन पैदा हो रहा है, यहाँ पे सगर्भो बाल उच्चते, तो गर्भ के अंदर प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, गर्भ के अंदर किसी तरह की डिफॉर्मिटी ना हो, और उसके बाद बालक के अंदर डेवलपमेंटल जो डिफॉर्मिटी होती है वो भी ना हो। इसके लिए सबसे पहली बात है कि गर्भावस्था से पहले ही काउंसलिंग, दोनों पति पत्नी की काउंसलिंग के साथ साथ में उनमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में शोधन और समन चिकित्सा, जो अपने दोषों के अनुसार सामान्य रूप से कर सकते हैं। और स्त्री के लिए अलग बताइए आचार्य ने, पुरुष के लिए अलग बताया, आहार भी अलग बताया, विहार भी अलग बताया है। उनका अगर सही तरह से शोधन करते हैं, सही तरह से अपने उसको चलते हैं, अगर कोई डिफॉर्मिटी है शोधन के द्वारा शुक्र का भी सही कर सकते हैं, शोधन के द्वारा भी अपने PCOD में सबसे ज्यादा शोधन का ही रोल है। तो इनको नॉर्मल करने के लिए पहले अपने सही तरह से अनुपात रेतस हो
और अनुपर देशक में स्त्रिया से अप्रदुष्ट और योनि सोड़ित गर्भाशय। तब फिर जाके कहा अपने, फिर कहते हैं यदा भवती संसर्ग ऋतु काले। अब ये काल बता दिया। तो काल से पहले जो कार्य किए जाते हैं गर्भाधान के अंदर वो तो क्वालिटी के लिए हैं। फिर अपने एएनसी आती है, चलो यदा भवती अपने संसर्ग ऋतु काले यदाव अनियो तथा युक्त संसर्गे, जैसा बता दिया है किस समय कौन से काल में, सुबह में, रात में, समय में, कौन सी पोजीशन में सेक्स करना है। ये क्या है, यदा तनयो युक्त संसर्गे। अब ये अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद में जो होता है संसर्ग हो जाता है, तो सत्व संप्रयोगात, सही सत्य जो प्रयोग बताए एएनसी के अंदर उनका सही तरह से प्रयोग करते हैं, गर्भो अभिनिवर्तते। तो गर्भ का उसमें सही तरह से वृद्धि होती है। और कैसे वृद्धि होती है, सात्मोपयोगात, सात्म रूप। तो एएनसी से पहले जो कार्य करते हैं वो गर्भाधान संस्कार के अंदर आते हैं, और गर्भाधान संस्कार के बाद में जो कार्य करते हैं वो गर्भ के विकृति को, रूप को और पोषण को और वृद्धि के लिए करते हैं। एएनसी भी जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है प्रेसी प्रजा करने के लिए पहले शारीरिक रूप से शरीर को सक्षम करना है, मानसिक रूप से दोनों पति पत्नी को सक्षम करना है, चाहे वो कैसे भी करना हो। अगर कोई जरूरी नहीं है कि गायत्री मंत्र के द्वारा करें, जरूरी नहीं है कि मेरी जिसमें आस्था है उसके द्वारा करें, जिसकी जिसमें आस्था है जिससे उसको मन को शांति मिलती है उसके द्वारा उसको करेंगे तो निश्चित ही शुक्र का भी अपनी क्वालिटी अच्छी होगी, शोणित की भी क्वालिटी, शोणित यानी ओवम की क्वालिटी अच्छी होगी, एंड्रोमीटियम सही होगा, रिसेप्टाइल होगी, गर्भाशय, गर्भाशय के लिए यूज किया है तो वहां पे एंड्रोमीटियम रिसेप्टाइल होगी। एंड्रोमीटियम रिसेप्टाइल होगी तो उसके बाद वहां पे एम्बेडिंग सही हो जाएगी। एम्बेडिंग के बाद में उसमें अगर ब्लड सर्कुलर प्लेसेंटो फीटल ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो बच्चे की ग्रोथ भी सही होगी। तो ये सारी चीजें जो है गर्भाधान संस्कार के अंदर आती हैं। तो बिफोर अपने बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्री अपने कंसेप्शन और आफ्टर कंसेप्शन, दोनों के दोनों चीजें हैं। इनके अंदर अगर आप सही तरह से आचार्यों के अनुसार, अपने आयुर्वेद के अनुसार करें तो मैंने देखा है और हमारे साथियों ने भी देखा है कि जो असंभव चीजें हैं, कई बार तो इतना चमत्कार हो जाता है, पेशेंट आके बताता है तो जो विधेय परमादर है, आयुर्वेदोपदेश विधेय परमादर है, इतना आनंद आता है। प्रैक्टिस में पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है हम लोग इस उम्र में पहुंच गए, परिपक्व अवस्था में आ गए, इसलिए ऐसा लगता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जब पेशेंट आके कहता है यस आई एम प्रेग्नेंट, तो इतना आनंद आता है कि दुनिया की सारी जमीन हमारी हो गई, राजा बन गए। तो ये जो आयुर्वेद के उपदेश से हम जब श्रद्धा प्राप्त करते हैं और पेशेंट को रिजल्ट मिलता है तो श्रद्धावान लभतेरा पे पेशेंट को भी लाभ मिलता है अगर श्रद्धा है उसकी, और हमारे चिकित्सक को भी मिलता है। तो देसी प्रजा के लिए जो अच्छी क्वालिटी की प्रजा हो, उसके बाद में पहले प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी होने के बाद और उसके बाद में डिलीवरी के समय भी अगर आचार्य का पालन करते हैं तो वो बिना दोष के बच्चा पैदा होता है। गर्भिणी अपनी माता और दोनों पुत्र अथवा तो जो शिशु है उस दोनों के अनापत्ति के आधार में अगर पैदा होता है तो नॉर्मल पैदा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर सही तरह से करते हैं तो। मेरा ऐसा मानना है संस्कार का मतलब है गुण पैदा करना। गुण किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, गर्भ के अंदर, और उसके अंदर क्वालिटी, अगर कच्चा माल अच्छा होगा तो निश्चित ही जो पैदा होने वाली चीज है वो अच्छी होगी। इसलिए पुरुष का स्वास्थ्य, क्षेत्रभूता स्मृता नारी, बीजभूता स्मृता पुमान। तो क्षेत्र भी तो अकेली महिला का ओवम ही नहीं देखना, पूरी ऑल ओवर अपने उसका हेल्थ देखनी है, इसलिए पहले से ही तैयारी करनी है। ऐसे पुरुष को भी अकेला अपने स्पर्म तो मोटाइल है, ठीक है, फर्टिलाइल है, सब कुछ है, मगर नहीं, शरीर का पूरा उसका हेल्थ पूरी होनी चाहिए, जिससे अपने हेल्थ के अंदर जेनेटिक भी आ जाता है, क्रोमोजोमल भी आ जाता है। दोष के अनुसार देखें तो बात भी कम समान होने चाहिए। तो शरीर दोनों के सही है तो निश्चित ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, गर्भाधान अच्छा होगा, और गर्भाधान के बाद उसका गर्भ का पोषण सही होगा। और अगर एक बच्चा पैदा होता है अगर वो बाल उच्चते थे तो बालक का स्वास्थ्य सही रहेगा, माँ का भी आफ्टर डिलीवरी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और फर्दर जो अपनी प्रेगनेंसी रहेगी उसके लिए भी उसको तैयारी रहेगी, तैयार रहेगा, शरीर सही रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है गर्भाधान का अगर संस्कार सही किया गया, जो धीरे धीरे करके हम छोड़ते जा रहे हैं, पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें होती थी, मेरे देखते देखते खत्म हुई हैं, उनको फिर से अब साइंटिफिक रूप से लोग अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित ही पुराने समय में जो संस्कारी बच्चे पैदा होते थे, जो अपने संस्कृति को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने संबंधों को निभाते थे, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते थे, इस तरह की प्रजा पैदा होगी जो राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, विश्व के लिए अच्छा होगा।
तो इसलिए आयुर्वेद का अगर पथ प्रदर्शन के ऊपर अगर बात ही चलते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा। मैम ने अच्छा प्रेजेंट किया है। कुछ दो चार मिनट में रास्ते में चलता रहा तो सुन भी रहा था, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और निश्चित ही हम ऐसे प्लेटफॉर्म से आते, जामनगर से आते हैं कि हम जो कहते हैं उस पर लोग ध्यान रखते हैं, और हम आचार्यों के ऋणी हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया और जिन्होंने हमको आयुर्वेद की प्रति श्रद्धा प्राप्त की तरह प्रदान की। थैंक यू वेरी मच IRS डॉक्टर पवन जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका। आपसे सुनने के बाद पूर्णम पूर्णमिदम वाली बात हो जाती है। मैं ऐसा कोई प्रोग्राम या प्लान आयुर्वेद वाले कर सकते हैं जो हम समाज में अवेयरनेस करें इसके विषय में, आदरणीय रामवीर सर। बिल्कुल, हम लोग हमारे मैम हैं जैसे हेतल दवे हैं, इसी के ऊपर काम कर रही हैं। डॉक्टर हेतल दवे इसी में काम कर रही हैं। प्री कंसेप्शन किस तरह से काउंसलिंग करनी है, प्री कंसेप्शन किस तरह से ओवम की और अपने स्पर्म की, जो NIA में काम करती हैं हेतल दवे जी, अपनी जामनगर से ही हैं। इसी तरह से जी। अपने ये जानी है, हितेश जानी, जो हमारे हाँ क्लासमेट हाँ। थे PG में। तो वो हितेश जानी ने पूरा संस्कार संस्थान ही चला दिया है उसमें राजकोट में, जो ठीक सिर्फ इसका बोला। गर्भधान संस्कार के लिए काम करते हैं। और कई लोगों ने इसको धीरे धीरे कर अपनाना शुरू कर दिया। इसके लिए अवेयरनेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कपल्स, नए नए कपल्स होते हैं, उससे पहले अपने कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर इस तरह की जागरूकता लाइए। कपल तो कोई अपने पास नहीं आएगा, इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं जहाँ पे कपल नहीं मिलते हो। तो कॉलेज के इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज में जो एडल्ट बच्चे हैं उनको समझाया तो फ्यूचर अपनी जब उनकी शादी होगी तो जब बच्चा प्लान कर रहे होंगे उस समय अपने उनको इस तरह से अगर मोटिवेट किया जाए तो निश्चित ही हमारा जो गर्भाधान संस्कार का जो प्रोजेक्ट है वो आगे चल के लोगों को सफल हो सकता है। उनको जागरूकता लानी पड़ेगी। आज का बच्चा जमाना जो है, आज के स्टूडेंट्स को, आज के आदमी को अगर साइंटिफिकली कोई चीज कहोगे तो उसकी समझ में आती है, अदरवाइज उसको नेग्लेक्ट कर देता है कि नहीं इसका रिजल्ट इस तरह से हुआ, उसको दिखाना पड़ता है रिजल्ट ये है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हम चीज कोई दिखाते हैं तो निश्चित ही ये लोग अपनी तरफ आते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो इसको गप मान के समझ छोड़ देते हैं कि नहीं क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? जीन्स पे क्या फर्क पड़ता है, अपने ओवम के क्वालिटी पे कैसे फर्क पड़ता है, अपने एंडोमीट्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन पे क्या पड़ता है, किस तरह से मेडिसिन काम करती है, किस तरह से साइकोलॉजी काम करती है। मैंने अभी जस्ट बात की, साइकोलॉजी GnRH पे काम करती है। और GnRH कहाँ काम करता है? और वो लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम फिर अपने HBO सिस्टम पे काम करता है। तो लिम्बिक सिस्टम को ठीक करने के लिए जब बच्चों को बताएंगे, जब एडल्ट को बताएंगे लिम्बिक सिस्टम किस तरह से हमारा काम करता है, उसमें प्राणायाम भी आ जाता है, उसमें ध्यान धारणा समाधि भी आती है, मानसिक चिकित्सा है, मनोविज्ञान विज्ञान आती है, वो सारा GnRH पे काम करता है। नॉर्मल साइकोलॉजिकल फेनोमेना काम करते हैं, उसके हॉर्मोन्स को अपने कंट्रोल करते हैं। तो इसको अगर साइंटिफिक रूप से बच्चों को बताएं, आने वाले एडल्ट्स को बताएं, आने वाले कपल्स को बताएं, तो निश्चित ही इसकी सफलता हम लोगों को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसलिए ये प्रश्न पूछा भाई जी जी कि कोई यूनिवर्सल ऐसा प्रोटोकॉल बन जाए कि गर्भाधान के पहले ये फ्लायर हो, उसका कोई इंटरेक्टिव मॉड्यूल हो टीवी पे कि हम समझा पाए, ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें एक समस्या है। हाँ। मैं स्पष्ट बात करूं, समस्या इसमें ये है कि मैं सोचता हूं कि मैं ही सबसे ज्यादा विद्वान हूं। ठीक बोले। आप सोचते हो आप ही सबसे ज्यादा विद्वान हो। तो बिल्कुल ठीक बोले। आयुर्वेद की समस्या ये है, जीरो ज्ञान वाले भी अपने आप को यूट्यूब पे देखिए आप, ऐसे ऐसे लोग बोल जाते हैं, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं हम। और तो उसमें जब एक प्रोटोकॉल बनाने आते हैं तो सब अपनी अपनी ठानते हैं, अपनी अपनी ठानते हैं, तो उसका क्या है, दही का वो छाछ तक्र बन के एकदम पानी जैसा हो जाता है। इसका अगर आपको देखना हो, इसका उदाहरण, एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए हमारे 40 साल के अंदर एक अपना अभी तक करिकुलम नहीं बन पाया आयुर्वेद का। हर बार वो आ जाती है, क्या नाम है, वो आ जाती है, कमेटी बन जाती है, हर बार चेंज हो जाता है। 40 साल में 40 बार तो अपना सिलेबस बदल गया।
तो इसी तरह से एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए अगर आप 4 आदमी भी उसमें रखते हो तो 4 प्रोटोकॉल उसके अंदर आएंगे, वो आदमी उसको कहेगा नहीं मेरा ही प्रोटोकॉल सही है, आपका गलत है। तो इसमें से ये समस्या आती है। हाँ, अगर निस्वार्थ रूप से जो आयुर्वेद की सेवा करना चाहते हैं, मेरा कुछ नहीं है, सब आयुर्वेद का है, आयुर्वेद के नाम से काम करना चाहते हैं, उन लोगों के अगर वो प्रोटोकॉल बनाते हैं तो निश्चित ही वो सफल होगा, क्योंकि वो आयुर्वेद के लिए काम करेंगे। मैं अपने नाम के लिए काम करूंगा तो मेरा ही नाम होना चाहिए, इसमें चक्कर में हमारा आयुर्वेद पीछे जा रहा है। बाकी का तो आप यूट्यूब पे देखो तो जाने कितने कितने लोग पड़े हुए हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और उसका क्या असर पड़ता है और वो चल रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रोटोकॉल तैयार, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल, जैसे अपने कोविड के लिए अगर हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोटोकॉल बनाया गया या विश्व में जो प्रोटोकॉल बनाया वही हिंदुस्तान में उन्होंने फॉलो किया, मॉडर्न साइंस वालों ने। मगर जब अपनी बात आई कोविड के अंदर तो सब लोगों ने अपना अपना काढ़ा बनाया, हर हाँ आदमी अपना काढ़ा बोल रहा है, हर आदमी अपने काढ़े में कोई कुटकी भी डाल रहा है, कोई फलाना भी डाल रहा है। अरे भाई, एक प्रोटोकॉल जब मॉडर्न साइंस कह सकती है कि ये प्रोटोकॉल है इसके अंदर, तो अपने क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं काढ़े के अंदर कुटकी भी डाल दूंगा, मैं सुदर्शन घनबटी भी डाल दूंगा, मैं उसमें त्रिभुवन कीर्ति भी डाल दूंगा, वो गए त्रिभुवन कीर्ति तो आपने डाली नहीं। तो हर आदमी का प्रोटोकॉल अलग अलग है, ये समस्या है हमारे यहाँ। एक प्रोटोकॉल किसी चीज के लिए नहीं बना अब तक, अभी तक नहीं बना। इन जनरल अपना यदि प्रकृति के हिसाब से ये प्रोटोकॉल बन जाता तो बहुत ही मतलब शानदार बात होती कि सबके काम आता। प्रकृति परीक्षण भी किया गया, प्रकृति परीक्षण बहुत अच्छा किया गया, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, मगर उसका एप्लीकेशन थी बहुत खराब थी। एप्लीकेशन ये खराब थी कि इतने दिन में इतने लोगों का करना है, कीर्तिमान थोड़ी पैदा करना हमको, हमको तो रिजल्ट देना है। हाँ अच्छी तरह एक पेशेंट के लिए एक आदमी का प्रकृति परीक्षण सही तरह से करो, 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट लगते हैं। हाँ। तो 15 मिनट के बाद में आपको ये कर दिया, 40 का टारगेट दे दिया, बच्चों को टारगेट दे दिया, इंस्टीट्यूशन को टारगेट दे दिया। उसमें कोई आदमी अपने ओटीपी तो देता नहीं है, किसमें ओटीपी का पैसा चला जाएगा, आदमी से ओटीपी और मांग रहे हैं उससे, ओटीपी हाँ देने के लोगों ने मना कर दिया, मना कर दिया तो बच्चे परेशान हो गए, कैसे करें उसका प्रकृति परीक्षण? तो उसमें भी प्रॉब्लम रही। कोई भी काम आप बना रहे हो तो उसका एप्लीकेशन है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, कोई इजी एप्लीकेशन हो, इजीली आदमी तक अप्रोच हो पाए, उसको अगर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो निश्चित ही प्रकृति के अनुसार जिस तरह से चिकित्सा व्यवस्था की जा सकती है वैसे इसके लिए भी किया जा सकता है। कोई भी कार्य है वो आचार्य ने कहा है, उसके आधार पर अगर चलेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। आज स्वेदनी ले लीजिए ना, सिंपल सी चीज है, मालिश कैसे करनी है, एक सिंपल सी चीज, सिर्फ अपना पंचकर्म को देखा जाए तो 80% स्नेह स्वेदन करते हैं, पवन विरेचन बहुत कम करते हैं। पंचकर्म के नाम पे बस्ती घुटने में तेल भर दिया, कमर में तेल भर दिया, पीठ पे तेल भर दिया, वो रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है वो बात की बात अलग है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन पे ग्रीवा बस्ती देते वो वहां पे सर्वाइकल वर्टिब्रा तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती वो बात अलग है। मगर उसके अंदर भी हम लोग अगर करते हैं तो नहीं नहीं, मैं जो मालिश कर रहा हूँ वो सही है, आप इस धनवंतर तेल से कर रहे हो वो गलत है, नारायण तेल से मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो ये प्रोटोकॉल, हम विद्वान ज्यादा होने के परिणाम स्वरूप प्रोटोकॉल नहीं बना रहा है, आचार्य ने तो लिख दिया है कि इसके अंदर ये काम करेगा। पंचकुड़ का कहाँ प्रयोग करना है, नारायण तेल का कहाँ काम करना है, सहचराज तेल का कहाँ काम करना है, आचार्य ने लिख दिया है। मगर हम लोग जो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वही है, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक प्रोटोकॉल बनाने में बहुत समस्याएं हैं। नहीं तो इतना अच्छा काम किया था महर्षि योगी ने, इतने लोगों को, विद्वानों को बिठा के एक अपने अच्छा काम करने की कोशिश की थी, एक चीज बनाने की कोशिश की थी। वहां पे भी यही हुआ, जितने वैद्य गए अपनी अपनी बात चलाने के बाद में कोई एक प्रोटोकॉल अभी तक ज्वर का नहीं हुआ। एक ज्वर त्रिभुवन कीर्ति देनी है तो कितनी देनी है, कौन सी प्रकृति को देनी है, प्रकृति ठीक है त्रिभुवन कीर्ति ज्वरग्न है तो किस प्रकृति को कितनी मात्रा में देनी है, वो अभी तक मात्रा डिसाइड नहीं हुई है। अगर अपने ज्वरग्न वत्सनाभ ज्वरग्न है तो पित्त प्रकृति को कितनी देनी है, कफ प्रकृति को कितनी देनी है, वात प्रकृति को कितनी मात्रा देनी है, तीनों की मात्रा निश्चित ही अलग अलग होगी। वो प्रोटोकॉल भी अभी तक नहीं बना पाए कि हम ये ज्वरग्न है तो ज्वरग्न मेडिसिन कितनी दें। तो समस्या ये है कि रामवीर शर्मा ही सबसे विद्वान है, वहां बड़ी समस्या आ जाती है। बाकी के आयुर्वेद की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोटोकॉल हर चीज के लिए बन सकता है, हर चीज के लिए। नहीं, मैं इसलिए आश्चर्य करता हूँ, देखिए गवर्नमेंट अलग है, प्राइवेट अलग है, आप दोनों के सुख भोग रहे हैं, मैं भी दोनों का, मैं तो प्राइवेट में ही रहा। मैं जीवा पे आश्चर्य करता हूँ, जीवा ने सबके प्रोटोकॉल बना लिए हाँ, हाँ। और जीवा के जो डॉक्टर हैं उनको बस केवल ट्रेनिंग जीवा के प्रोटोकॉल की होती है, टोटल आयुर्वेद की नहीं। लेकिन हाँ, तो उसमें भी उसका धंधा अच्छा चल रहा है। धंधा चीज देखिए डॉक्टर साहब, दोनों चीज अलग अलग है, धंधा करना अलग चीज है, आयुर्वेद की बात करना अलग चीज है। नहीं आयुर्वेद नहीं, धंधा नहीं करता, आयुर्वेद धंधा नहीं कर पाता। अरे आयुर्वेद धंधा नहीं कर पाता, ठीक आयुर्वेद बोला। धंधा, बिजनेस अलग है।
मैंने अभी बताया ना, बिजनेस पंचकर्म के नाम से सिर्फ स्नेह स्वेदन ही बिक रहा है। अब उसका हाँ अलग अलग स्पा के कलर बता दिए, अलग से तेल बता दिए, सिरोबस्ती बता दी। हाँ बमन विरेचन नहीं बिक रहा, बस्ती थोड़ी सी बिच रही है, हाँ इन्वेशन वाला नहीं बिक रहा। तो धंधा करना अलग है। जितने भी पंचकर्म का अपना वो जो पैसा उठ रहा है, बीमा से उठ रहा हो, कहीं से भी उठ रहा हो, वो सारा स्नेह स्वेदन से उठ रहा है। उठ रहा तो है। धंधा करना अलग है और आयुर्वेद की चीज अलग है। आयुर्वेद का अगर काम करना है तो निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा। बाबा जी ने भी बना दिया प्रोटोकॉल। तो हमारे जितने भी पतंजलि के चिकित्सक हमारे बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, ज्यादातर सारे स्टूडेंट को कह दिया गया ये मेडिसिन इस रोग के अंदर लिखनी है। तो उनका प्रोटोकॉल उनका भी बन गया। मगर क्या इस तरह से वो धंधा कर सकते हैं? मगर आयुर्वेद का, मुझे लगता है आयुर्वेद का इतना प्रचार प्रसार हो जाएगा, आयुर्वेद के प्रति लोगों की श्रद्धा हो जाएगी। मगर हकीकत में देखा जाए 100% अगर आयुर्वेद का काम करना चाहे तो ऋषि बन के ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जो ऋषियों ने किया था। रहे हैं सब। चरक ने अपना आयुष नाम नहीं समृद्धि लिखा। के माध्यम से हम लोग यही तो कर रहे हैं। आप हाँ सब मिलकर आयुष समृद्धि के माध्यम से यही तो कर रहे हैं। जी जी जय जी, हो। इसमें प्रलोभन नहीं है, इसलिए प्रलोभन नहीं है, हाँ इसलिए चल रहा है। प्रलोभन करोगे दूसरे दिन बंद हो जाएगा, सीधा हाँ हिसाब। हाँ, ठीक बोले आप। ठीक प्रलोभन बोले हो आप। जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं थैंक यू, जलपा पटेल थैंक जी यू से वेरी मच। उनके विचार और डॉक्टर जेपी सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो यदि उनके विचार आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर जेपी सिंह एंड जलपा पटेल जी। जलपा जी, नमस्कार नमस्कार साहब। नमस्कार पवन जी, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और आपके ये टॉपिक है बहुत बढ़िया है। और ये जो गर्भाधान के बारे में या इनफर्टिलिटी वगैरह के बारे में जो आप एक प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये आज की बड़ी ज्वलंत समस्या है कि पहले बच्चे शादी नहीं करते, शादी शादी करते हैं तो प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग करते हैं तब फिर गर्भाधान नहीं होता। और उसके लिए अपना सीमा जी ने, और मैंने पूरा नहीं सुना सीमा जी का, बड़ा अच्छा उनका भी भाषण रहा। और दूसरे वक्ता भी और उदय जी का भी बहुत बढ़िया रहा। तो ये एक जो सेक्टर है इस मामले के अंदर, जो आजकल बच्चे, आप देखिए कितने सेंटर इनफर्टिलिटी के खुल गए हैं। आईवीएफ वगैरह ये सब कराने का एक बड़ा भारी गोरख धंधा है और बड़ा कॉस्टली धंधा है। तो इस मामले के अंदर अगर एक ढंग से इस सेक्टर को उठाया जाए, और जैसा बताया गया कि शोधन के बाद, बस्ती के बाद में गर्भाशय शोधन, गर्भ का शोधन और अपना वीर्य शोधन, और इस हिसाब से ये सारा सब कुछ व्यवस्था हो सके, तो एक बहुत बड़ी एक हमारी मार्केट एक पैदा हो सकती है। हमारे जो बच्चे हैं या हम लोगों को एक वो बन सकता है। पर जैसे उदयवीर जी ने कहा कि भाई 40 साल के अंदर ये कुछ नहीं हुआ, हम लोग बातें तो ठीक करते हैं पर उस बात में को उसको किस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, कैसे हो, ये बड़ा जरूरी चीज है। तो अगर आयुर्वेद, अगर क्या है वो आयुर्वेद में सब कुछ है और उसको उस हिसाब से दोष दुष्ट के मुताबिक उसका प्रयोग किया जाए, और मरीजों को एक उसका एक स्पेशलाइजेशन, और उस स्पेशलाइजेशन के बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन का किया जाए, तो रोगियों की कमी नहीं है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है इस मामले के अंदर। जब जरूरत बच्चे की पैदा होती है तो माँ बाप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर पवन जी का प्रयास इस माध्यम से जो हो रहा है लोगों के अंदर, हम लोगों सभी के अंदर जो है वो एक भावना पैदा कर रहे हैं। और वो जो बार बार प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, तो प्रोटोकॉल का तो भाई अब हम लोग तो जैसे आयुर्वेद से सब लोग जुड़े हुए हैं, और जो हमारे लोगों की प्रवृत्ति है, चाहे औषध निर्माण के रूप में हो, चाहे वो वैद्य के रूप में हो, और चाहे वो कॉलेज के रूप में है, वो तो सभी को स्पष्ट है कि क्या है क्या नहीं है। तो उस सब से हट करके जो भी हमारी स्पेशली, मैं तो ये अपना, वैसे मैंने कहा बहुत दिनों के बाद मैं आज जोड़ रहा था, पर ये जो जब आपने प्रोटोकॉल की बात कही तो मेरे मन में पवन जी के, तो मेरे मन में स्ट्राइक किया कि ये एक ऐसा अछूता सा आयुर्वेद के लिए है कि हर कोई जो है एलोपैथी की ओर भाग रहा है। और वो भी जो है ये जितने भी सेंटर बने हुए हैं, आगे किसी जमाने में
लोग लुधियाना जाते थे, अब हर शहर के अंदर जो है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, अब हर शहर के अंदर 20 सेंटर खुले हुए हैं और लोग जो हैं किसी भी एक्सटेंट तक पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं, जाते हैं, करते कराते हैं। तो हमारा काम जो है सस्ते के अंदर अच्छा और बिल्कुल किसी भी तरह की, क्या कहते हैं, किसी कमी के बढ़िया हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है नेशनल कमीशन ऑफ आईएसएम से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से ये जो ये सेक्टर जो विशेष करके है, जिसके लिए मतलब हर कोई ललायत है, तो उस विषय में अगर कोई स्पेशलाइजेशन, कोई सेंटर खुले और उस सेंटरों के अंदर, चाहे वो एनआईए के अंदर जयपुर के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, उस विधि से अगर जो हमें सक्सेस रेट मिले और सक्सेस स्टोरी जो है वो अपना प्रकाशित हों, तो लोग जरूर आकर्षित होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अभी वो सीमा जी और जो दूसरे विद्वान थे, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ऐसा किया, ऐसा किया। तो ये एक्चुअली प्रोपोगेशन की कमी है, तो वो ऐसा ऐसा प्रोपोगेट हो तो जरूर होगा। और आजकल के अखबार भी जो है इन सब चीजों को प्रकाशित करने में किसी तरह का वो संकोच नहीं करते कि लोगों के हित के लिए वो ये सब चीजें छापने के लिए भी तैयार हैं। और ये बच्चों के अंदर भी, जैसे अभी बात हो रही थी कि जो हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी उनको समझाया जा सकता है। और ये सब चीजें उन्होंने जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, और विशेष करके जो प्रसूति के अंदर हैं, उनको विशेष किया जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ी सेवा होगी। और इसके लिए मैं डॉक्टर पवन जी को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और ये सभी वक्ताओं को भी मेरा सादर नमन है कि बहुत बढ़िया इनकी प्रेजेंटेशन रही है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जुड़े रहिएगा। अगला आपकी स्मृतियां हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि साल भर बैंड बजाने के बाद एक दिन हस्बैंड का एप्रिसिएशन डे है आज। हस्बैंड क्या क्या? आज हस्बैंड एप्रिसिएशन डे है। हाँ, इसके बाद अच्छा। हाँ, तो मैं मतलब आपकी मधुर स्मृतियां भी सुनना चाहूंगा। तो साल भर भले ही बैंड बजता रहे, लेकिन आज हस्बैंड का एप्रिसिएशन डे है। ये तो ये 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 आप गलत बात कहते हैं कि जो है ना, ये तो आप अन्याय की बात कर रहे हैं। ये तो अन्याय है कि कहाँ बच रही। वो तो देखो, बात ये है कि ये ये तो नारी पूजनते तत् बसंती देवता है। ये नारी से तो संसार चल रहा है। जी, इसीलिए तो मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ विचारों के लिए। प्लीज जुड़े रहिएगा। रामवीर भाई कुछ बोल रहे हैं। मैं थोड़ा, भाई जी ने बताया, जेपी सिंह जी ने, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हाँ, बहुत ही ज्वलंत समस्या बता दी है भाई जी ने। सबसे पहले कि श्रेयसी प्रजा कब होगी? जब ओवम की और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। अब बच्चे 35 साल पे शादी कर रहे हैं, 40 साल पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो जो स्पर्म की क्वालिटी, ओवम की क्वालिटी डाउन हो रही है। अब क्या है, आज के समय में रेडीमेड का जमाना है, जोमेटो का, कोई भी बनाना नहीं चाहता है। आप आईवीएफ, बच्चे क्या चाहते हैं कि बच्चे ओवरी काम करे, टेस्टिकल काम करे, सेक्सुअल एक्ट सही हो, इसके लिए नहीं करते। डायरेक्ट आईवीएफ, तैयार माल मिलता है, आईवीएफ कराओ, डिलीवरी कराओ, डायरेक्ट नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन करो। आज मेरे पास पेशेंट आया, तो पेशेंट ने कहा, साहब मैंने कहा पीसीओडी का पेशेंट है, पीसीओएस का, पीसीओडी नहीं बोले, पीसीओएस का, सारे उसके अंदर सिम्टम्स थे। मैंने कहा भाई, आपको मेडिसिन लेने के बाद में 3 महीने के बाद में रिजल्ट मिलना शुरू होगा, एक एक साल पे आपको मेंसेस आ रहा है। उन्होंने कहा साहब कोई ऐसी दवाई नहीं जिससे जल्दी रिजल्ट आ जाए? तो मैंने कहा हार्मोन देता है दवाई, हार्मोन ले लीजिए, मॉडर्न साइंस वाले दे देंगे, ठीक हो जाओगे। तो क्या है, आदमी आज के समय में रेडीमेड चीज लेना चाह रहा है। तो गर्भ संस्कार हमको रेडीमेड नहीं करके वो लोग क्या करते हैं, आईवीएफ के, अभी भाई जी ने बताया कि 20 एक एक शहर में 20 नहीं 40 आईवीएफ सेंटर खुले हुए। आदमी आयुर्वेद के साथ में आके ये नहीं स्पर्म की क्वालिटी बनाए, अपने ओवम की क्वालिटी बनाए, उसकी चिकित्सा नहीं लेके वो हार्मोन के आधार पर ओवम को परिपक्व कराते हैं, आईवीएफ कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें रेडीमेड माल देते हैं। तो जमाना चेंज हो गया है, फिर से हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कॉलेज में नए बच्चों को। उसके आधार पर अगर देखेंगे, उल्टी क्वालिटी बताएं, तो निश्चित ही अपने को रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बिल्कुल जो आपका कहना ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक कहना है। और इस चीज का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए कि समय के ऊपर शादी हो, समय के ऊपर बच्चा हो। बिल्कुल भाई जी, एकदम सही, आपका एब्सोल्युटली राइट। मैंने इसलिए अप्रिशिएट कहा ना, भाई जी ने जो बात की है मैं उसको पकड़ा कि श्रेयसी प्रजा के लिए उम्र है, ये उम्र गड़बड़ हो गई तो गए काम से।
हाँ सरकार ने कह दिया है 16 वर्ष से लेकर के द्वात्रिंश वर्षावधि, 16 से लेकर 32 साल तक ही अपने फर्टिलाइजेशन रहता है। ततस्तु तरुणी गया, उसके बाद तरुणी हो जाती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है, और वृद्धावस्था 50 बार के बाद हो जाती है। तो ये फर्टिलिटी का अभी टाइम बता दिया आचार्य ने, और टाइम पर उसमें नहीं अब, करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, और अभी क्वालिटी की। पवन जी कह रहे थे कि हस्बैंड डे है, तो आप सारा साल और आज का दिन की बात कर रहे थे। वैसे तो मेरी पत्नी जो है 2018 में स्वर्गलोक हो गई हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दूं कि मैं मैं आ रहा 1963 हूँ, का नेक्स्ट वेबिनार शेयर कर रहा हूँ, उसी के लिए सर उद्घाटन आपसे ही कराऊंगा। आपके विचारों के लोक ये लिए, ये वेबिनार आपके खत्म कर दूं। आपके जी विचारों अच्छा के ठीक। लिए, आपके विचारों के लिए विचारों की जरूरत है। जरूर। बेचारे नहीं रामवीर भाई जी, देखिएगा, मार्केटिंग ऐसी चीज है, जर्मनी में आर्टिफिशियल बॉम्ब तैयार हो गए, तो आप देखिएगा धीरे धीरे, आप किसी आईवीएफ स्पेशलिस्ट पे जाएंगे, वो पैकेट में फर्टिलाइज्ड ओवम देगा, आपको कैसा फर्टिलाइज चाहिए, क्या ब्रेन स्टेटस चाहिए, क्या फिजिकल एट्रीब्यूट चाहिए, वो आप अपनी पसंद से छांटे बीने और लेके चले आए, रेडी टू ईट जैसा मामला, काम खत्म हो गया। ऐसा आएगा, ये हम लोग जिंदा है नहीं आज, होंगे। आज भी मेरे मित्र है ना, मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, कम से कम 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट आईबीएफ का काम कर रही हैं, सब मेरे क्लोज हैं एकदम। मगर जब पीसीओडी का केस आ जाता है तो वो भी हमारे पास भेजती है कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, उनके पास ट्रीटमेंट है। वो भी बेचारे हार्मोन के अलावा कुछ नहीं है। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, डायरेक्ट आईवीएफ।